session on जैसे you are aware that today's session is on audit analysis to Tally Prime release 2.0. तो हमारे पास मल्टीपल फीचर्स Tally रिलीज 2.0 के लिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगेन वेलकम यू ऑल फॉर मॉर्निंग सेशन। मुझे पता है आप लोगों का बिजी शेड्यूल है और आप लोगों ने वक्त निकाल के ये सेशन को मतलब कि 11 बजे का जो टाइमिंग है तो उसके लिए आप लोग को वेलकम है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे जो आज के स्पीकर हैं मिस्टर उत्तम चांद जी, जिनका ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो 25 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और सबसे बड़ी बात है कि वो टैली के इवेंजलिस्ट भी हैं हमारे पैनल में। और इनका जो अचीवमेंट मैं बताऊं कि जो टैली का जो आईसीआईसीआई के साथ जो टाई अप हुआ था 2000 से, तो 2000 से वो टैली के साथ जुड़े हुए हैं और अकॉर्डिंगली उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इनका एक्सपर्टाइज है ये डायरेक्ट टैक्सेशन में, इनका एक्सपर्टाइज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट जो डेवलप हो रही है तो उसमें भी इनका रेक्टिफिकेशन ऑफ सम फीचर इशू में भी इनका योगदान है। और मतलब कि वी आर वेरी मतलब कि thankful to him to giving his time to address you all and हमें भी बहुत कुछ उनसे सीखना भी है। और थैंक यू उत्तम जी फॉर योर टुडे सेशन फॉर अवेलेबल फॉर टुडे सेशन। और हमारे साथ मिस्टर अंकित खाटुआ हैं जो टैली सॉल्यूशन से हैं। तो अंकित जी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट फ्रॉम टैली सॉल्यूशंस। तो we will start the session currently. So Ankit, hand over to you and we can start the proceeding. Thank you Ravish and welcome all to Tally session। and ये session जो है हमने organize किया है specially professional के लिए। so ये session में उत्तम चांद जी जो हैं वो हमें डिटेल में ऑडिट एनालिसिस के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी देंगे। एंड इसके अलावा जो टैली के अंदर अभी जो लेटेस्ट रिलीज है 2.0 उसमें जो एनहांसमेंट हुआ है जो की फीचर्स जो हैं वो उसके ऊपर भी गो थ्रू कराएंगे। जो मेन फीचर्स हैं अभी लेटेस्ट 2.0 रिलीज में, जैसे कनेक्टेड ईवेबल सर्विसेज हो गया एंड एचएसएन एंड जीएसटीएन के वैलिडेशन हो गया, एचएसएन समरी की जो रिक्वायरमेंट थी वो, एंड जो सेव रिपोर्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हम लेके आए हैं, सेव रिपोर्ट व्यू जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड रिपोर्ट्स को कैसे हम सिक्योर्ड लेयर के थ्रू मोबाइल और किसी भी डिवाइस में अगर हम मोबिलिटी में है तो कैसे एक्सेस करेंगे वो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, सो I would request C. Uttam Chand ji to take over and start the detailed presentation for us. Thank you. Thank you, Ravnesh ji or Ankit ji. Happy morning, everyone. Let me share the screen first. Hope my screen is visible. Yes, sir. Your screen is visible. Okay. So Tally एक ऐसा सॉफ्टवेयर है which is very widely used, particularly in the medium and the small industry. And एक सॉफ्टवेयर जो है which is very very flexible, useful, and it allows you to look beyond what is seen in front of you. अगर और कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे आपको तो आपका हाथ बंधा हुआ जैसा रहेगा। You cannot see more than what is shown to you. You cannot go behind and see something what is there. आपको तो ये भी नहीं पता रहेगा कि ये क्यों ले रहे हैं, कैसे हो रहा है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ऑडिट के जाते हैं तो बैंक में पिनाकल करके एक सॉफ्टवेयर होता है। पिनाकल सॉफ्टवेयर होता है तो वो उनको आपको ऐसे एंट्री देते हैं ताकि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, जो देखना है एंड व्हाट हैज टू बी सीन बाय यू, व्हाट इज टू बी अलाउड, दे अलाउ यू ओनली अप टू दैट लेवल. They don't allow you beyond any area which is visible there. So with this background, let us see what is the features which are available, how we can use Tally
because it's very simpler, very easy to use, but very powerful connected services hai iske, and the data is also secured when you are on the move. So it is best for us as a chartered accountant or the service provider, and it is also the best for the clients in majority of the circumstances, but it is always up to us how do we use it. So with this background, what the agenda today is to see how do you do the audit analysis using Tally, in Tally, around Tally, and उसके साथ भी कि compliance related क्या होता है, जैसे GST compliances है which are now new, which has come saying that your GSTR1 should have HSN summary, HSN summary percentage wise. All of a sudden in the month of April they amended the form and they said that now you have to give the summary for HSN percentage wise. So the HSN percentage wise summary comes out automatically. That means what? HSN has to be given correctly. तो HSN का जो rate है वो correctly adopt किया है नहीं किया है. So we have to find whether the HSN rate adopted and the description given by the client matches with the HSN code as given by the department. तो उसके लिए भी now Tally helps us to validate the HSN, whether the HSN number given by the customer or the person matches with the description of the product. Though we cannot get into the product classification, इतना deep में नहीं जाएंगे, but overall at least we can check it. Similarly, अभी आपका है कि e-way bill cannot be generated if you have not filed the return for 2 months. So whether e-way bill has been blocked for it. तो आपको देखना पड़ेगा कि e-way bill block हुआ है कि नहीं है. So that also can be done using Tally. Using Tally, we can find out whether the GSTN number provided to us matches with the information which is there as per their portal. तो पोर्टल के अंदर GSTN नंबर विसावी हम चेक करते थे वेबसाइट में gst.gov.in में. We will give PAN based checking or GSTN number based checking. तो GSTN number based checking में the firm name, the legal name, whether that is active, whether the e-way bill is active or not, that information is pulled into Tally and shown to you in front of your screen based on what is the information you have punched in, the information in Tally vis-a-vis the information as per the portal. Both is seen on the screen, and if there is any error, we can find it out at that time itself. So it is more into a business facilitator. So it is facilitating the business people to do the business more smoothly. So it's a more a software for ease of business than a software per se only for accounts. So it is just not account, it's beyond account right now. So अगर अपने को effective performance देना है तो we have to take painstaking preparation. So Uttam ji, please unmute yourself. yeah, I have unmuted myself. You are able to hear me? Yes sir, audible. Okay. So अगर अपने को effective performance करना है तो we have to be painstaking preparation. वो painstaking preparation is one time, but the performance will be effective throughout the year and for the future years to come. Similarly, अगर अपने को investment नहीं करेंगे तो we will not be able to do the business it will become risky. So investment in risk management is also very important. So the risk of giving a wrong GSTN number, the risk of giving a wrong HSN code number, the risk of charging wrongly, all that will have a risk of to the entire business per se. So Tally will help us in finding out the risk and mitigating that risk. So according to me, any activity for that matter. Recording in progress. So any activity which is there has to be bifurcated into 4 parts: source, destination, procedure path और documentation. So अगर मैं audit कर रहा हूँ तो audit में मेरा destination क्या है और मेरा source क्या है, path क्या है और documentation क्या है. तो अगर मेरा path, अगर मेरे को करना है tax audit तो destination है issue of form 3CD, 3CA, 3CB, 3CD.
अगर मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट करना है। अगर मेरा जीएसटी है तो फॉर्म 9C, अभी 9C नहीं है तो 9 का अपडेशन करना है। तो दैट इज द डेस्टिनेशन। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्टिविटी, व्हेन आई डू एनालिसिस ऑफ एनी एक्टिविटी, द स्टार्टिंग पॉइंट इज माय डेस्टिनेशन। अगर मेरा डेस्टिनेशन करेक्ट रहेगा तो आई विल बी एबल टू बाइफरकेट माय एक्टिविटी एंड देन गो टू द सोर्स। अगर मेरे को ऑडिट एनालिसिस करना है तो मेरा सोर्स देखना है कि टैली डेटा है या क्या डेटा है। अगर मेरा टैली डेटा है तो मेरा प्रोसेस क्या होगा और प्रोसेस में मेरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करूंगा। दैट इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर एनी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अपने पास मोबाइल है, कितने लोगों ने मोबाइल का मैनुअल पढ़ा है? मोस्ट प्रोबेबली 99.99% किसी ने मैनुअल नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप कैसे यूज कर रहे हैं? जितना आप जानते हैं उतना यूज कर रहे हैं। तो टैली का भी यही इशू था कि टैली का पहले हेल्प मैनुअल आता था, वो बल्कि फाइल रहती थी, अराउंड 10 MB की कुछ फाइल रहती थी वो, विच इज बिगर देन द पैकेज इटसेल्फ। EXE फाइल से भी बड़ा था वो। परंतु उसमें भी प्रॉब्लम क्या था कि कैसे ढूंढे, कैसे जाने कि कहाँ पे मेरी चीज जो है वो मिलेगी। How do I search in the entire data which is there? And it becomes very cumbersome to do. So slowly what happened is no one was giving manual at all now. When you see a mobile, when you buy a mobile now, कैसे स्टार्ट करना उसके अलावा कोई आपको मैनुअल नहीं मिलती है। जैसे आप इशू आता है तो फाइंड आउट करते हो कहाँ है, देन यू गो एंड गूगल सर्च और यू गो टू द वेबसाइट एंड देन सर्च बेस्ड ऑन द मोबाइल मॉडल एंड देन नो। तो टैली ने अभी क्या किया है कि आप जिस स्क्रीन पे हो उस स्क्रीन में ही हेल्प कमांड डालोगे और अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो उस स्क्रीन के लिए क्या हेल्प चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो दैट इज द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर द मैनुअल इटसेल्फ इज नाउ गेटिंग आउट ऑफ शेप। So Tally Prime is simply the simplest because of its look, feel और ब्राउजिंग का जो हो गया है अभी वी कैन यूज विंडोज जैसा हो गया है, माउस as well as keyboard both can be used. Single sign in for multiple companies possible. शॉर्टकट कीज को बंडल करके एक जगह पे दे दिया है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स करके एक नया कॉन्सेप्ट लाके मेन स्क्रीन पे दिया है। पहले ये अंदर था लिस्ट ऑफ अकाउंट्स करके, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स करके आ गया है। One of the powerful tool which has come is go to or switch to. From any screen to any screen, I can go to, switch to, and when I come back, I'll go to the screen from where I started, or I can go to any of the screens which I had moved during that period. I can, because it will have a track कि आप कहाँ कहाँ पे गए थे और उसमें कहाँ जाना है, आप डायरेक्टली you can go. Change view करके एक आया है कि you can just change my view and see it differently. बेसिस ऑफ वैल्यू करके एक बंडल्ड सर्विस किया है। एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स आ गए हैं एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सेव व्यू। सेव व्यू इज वेरी वेरी पावरफुल टूल which will be very helpful particularly to professionals and particularly to people who are reluctant to use much of the data. They are afraid of using Tally or any software for that matter, because maybe because of age or anything else, any other reason which could be there. तो उनके लिए ये सेव व्यू इज वेरी पावरफुल। सो वी कैन कॉन्फ़िगर, फॉर एग्जांपल अगर कोई सीनियर है जो मैनेजमेंट में है, वो बोलते हैं कि मेरे को ये सब इतना कम्बरसम नहीं चाहिए, सो वी कैन क्रिएट इन सच ए वे एंड गिव इन 3 or 4 स्टेप्स कि वो देखेंगे तो उनको वैसे ही दिखेगा जो उनको चाहिए। ऑडिट एनालिसिस एंड ऑडिट सैम्पलिंग का टेक्निक भी अंदर है, सो वी कैन डू इट एंड वी कैन डू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर आवर ऑडिट। GSTN and HSN validation आ गया है and the save report view which I have just now discussed आ गया है and tally reports in browser, that is मोबाइल में आपका डेटा देख सकते हो। ये पहले भी आ गया था बट अभी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन हो गया है। पहले जब आया था तब आपको देखने में दुविधा थी because the fonts were very small. Now it is very visible and you can see it and you can also see it in a different model. अगर आपको just टिल्ट करोगे तो मॉडल दिख जाएगा। we'll show to that later on and it is convenient to access because data connect रहा तो we can anywhere when I am moving, maybe I am in client's place, in the client's place and say I am customer place पे हूँ, अगर I am a businessman, I am in my customer's place and I want to show him what is the outstanding, I want to give him, he says there's no outstanding, then and there I can download
the statement of that particular person and hand over to him through WhatsApp or mail. That is the advantage. So the major which are come up is single sign-in. Go-to switch to is one powerful tool which is new. Save you is new, and the GST and validation, Tally report in browser, ये सब enhanced और नए फीचर Tally के. This is the reason why you should move from your older version to Tally Prime 2. Particularly HSN और WhatsApp के लिए you have to move to Tally Prime. Simplify the simplest, जो simplest पैकेज बोल रहे थे Tally को, उसको और simplify कर दिया है. And it is a powerful connected services. इसके connected services, whether you are through browser or through net, you can either go remote access, you can go browser access, दोनों अलग access है. Again, it is there. Secured access to data on the move is now possible. So major features which are there, जैसे कुछ bundle करके बताएं इस screen पे कि change mode आया है. There is a method which is there. Go to switch to करके एक major icon main screen पे आया हुआ है. Single sign in, that means when I sign in one particular data, मैंने user ID password उस data का दे दिया है. अगर वही data अगर दूसरे को दूसरे डेटा में भी है, वही यूजर आईडी पासवर्ड कंपनी ए में है और कंपनी बी में भी वही यूजर आईडी पासवर्ड इज ऑलरेडी क्रिएटेड, देन आई कैन जस्ट सेलेक्ट दैट कंपनी. वो कंपनी भी ओपन हो जाएगी, वो यूजर आईडी पासवर्ड वापस नहीं मांगेगा. सो द कंडीशन इज द यूजर शुड हैव बीन क्रिएटेड इन ऑल द डेटास, एंड वंस इट इज क्रिएटेड इन ऑल द डेटास, द यूजर आईडी पासवर्ड इज सेम अक्रॉस ऑल द डेटा. देन if I opened one data, then the subsequent data which is opened will not require me to sign in again. That is what is single sign in. And then there is a optimized invoice printing एक नया आया है, where the printing अगर 2 पेज में जा रहा है तो I can optimize and reduce the number of pages. Chart of account, change view, these are the new features which have come in Tally Prime. Browser folder and select data has become very smooth now. Otherwise we had to give and copy paste में भी अपने कर रहे थे. Control Alt C Control Alt V था Tally के अंदर, and Windows में अंदर था Control C Control V. So the same is now copied to Tally Prime 2. In Tally Prime you can use Control C and Control V as we are using it for Windows. यहाँ पे Control Alt V की जरूरत नहीं है, तो copy paste करना बहुत easy हो गया है. I can once I open Tally I'll be able to show you कि अभी फोल्डर का नंबर ही बता देगा अपने को. फोल्डर का नंबर बता देगा, या ड्राइव है तो ड्राइव बता देगा, और ड्राइव से वी कैन सेलेक्ट दी एंड वी कैन ब्राउज थ्रू द एंटायर फोल्डर एट दैट पॉइंट इटसेल्फ. दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल. सिंगल लॉगिन, सिंगल साइन इन फॉर ऑल मल्टीपल कंपनीज विद द सेम क्रेडेंशियल्स. So the condition is same credentials should be available across all the companies. If it is available across all the companies, if I have logged in into one company and the subsequent login for the other company, the sign-in user ID credentials will not be asked. It will automatically take me to that. पर उसके लिए अपने को activate करना पड़ता है. वो that also I will show you. Shortcut keys को harmonize करके simplify किया है. In certain places, your shortcut key would have got changed. For example, आपका जो F5 था for reconciliation, all that has gone for a change. So you have to, sorry, Billwise Alt B था पहले, अब F5 है. So there are shortcut keys which have got some changes, and there are shortcut keys which have been bundled and put together. There is one thing called chart of accounts. So the chart of accounts has come on the main screen, and it gives me the entire chart which is there. Entire chart flow ऐसे ही एक ही जगह पे आपको दिख जाएगा. This was already available, but it was available under display statement of account status, list of accounts के अंदर था. इसको main screen पे लेके आ गए. Go to switch to एक powerful tool है. Go to switch to normally क्या होता था कि we were passing an entry. We may be in a particular screen. We would have gone halfway through the voucher capturing. हाफवे थ्रू जब चले गए हैं तब सडनली कोई बोलता है कि मेरे को आप ये रिपोर्ट दो, अर्जेंट है अभी. तो मेरे को इधर वो वाउचर कंप्लीट करके देन आई हैव टू गो बैक टू द स्क्रीन, और आई हैव टू
come out without saving that voucher. So what they have done is now with that screen, as is where is, जहाँ पे थे वहां से we can click go to, and go to से अपने को जो भी रिपोर्ट देखना है, जो भी करना है करके, you can, once you come out of that, you will come back to the position from where you went. That means for example अगर वाउचर में हैं आप और आप अमाउंट कॉलम पे थे, उस अमाउंट कॉलम पे उस समय you did something and you wanted to generate a report, a balance sheet निकालना था या ट्रायल बैलेंस निकालना था या लेजर बैलेंस निकालना था, so you have gone to go to, went to that particular report, took that report, came out of that report, and it will come back to the place that is the amount column, वहीं पे माउस रहेगा जहां से आप गए थे. This is a very powerful tool, go to, and also it is a powerful tool to go to any of the report without actually going by display, statement of accounts, ledger, ऐसे जाते थे. You can straight away go there now with go to. Change view, ये भी एक है जो it is for a report देखने के लिए चेंज व्यू में ही आप देख सकते हैं कि कितना आपका रिपोर्ट जो आया था उसका कैसे आप बदल के देख सकते हैं. बेसिस ऑफ वैल्यू इज अनदर ऑप्शन व्हिच हैज बीन बंडल्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल अगर आप बीआरएस में देखोगे तो वाउचर्स रिकंसाइल्ड ऑलरेडी बेसिस ऑफ वैल्यू में ले जाके बंडल करके रखें. एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स व्हिच आर देयर, नाउ इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव and it can generate the report what you want. Save my view is another powerful and personalized view. So अगर मेरे लैपटॉप में मैं अगर कर देता हूं कि मैं कंपनी फॉर ऑल द कंपनीज करूंगा, मेरे को वही व्यू दिखेगा. So with this, let us move to Tally Prime and see that. Just a minute. Just sharing the screen. Okay. अभी टैली जब ऑन करते हैं तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सेइंग द स्पेसिफिक पाथ, ड्राइव और रिमोट एक्सेस और क्रिएट अ कंपनी. दिस हाउ इट विल बी शोइंग नाउ, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग इट, दिस इज व्हाट विद द फोल्डर व्हिच विल बी शोइंग यू. मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो अंदर चला जाएगा. मैं अब करूंगा तो अगेन इट विल गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन. So if I am using 21-22 data, then I want to open this data. So I am just opening this data year or the financial year 2021. Normally क्या होता है कि data is for the current period which will be running up to the current date. So मैं period change कर दूंगा for April 20, March 21. So this is the data which I am going to do the audit, and मेरे को previous year data देखना है. तो previous year data open करने के लिए I will open the data now. Go up, previous year data, and it opens. अगर देखोगे तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया है क्योंकि I have gone with the same user ID credentials. It is also created in this company. So once it is created, it will not ask for the user ID password. How to do that? Help one may. Enable auto login for companies with the same credentials. Yes था. अगर ये no रहता तो मेरे को ये user ID password मांगता. तो it is in F1 startup settings. उसके अंदर enable auto login for companies with same credentials
अगर मैं इसको yes कर देता हूं तो for all the companies wherever the same credentials are available, it will pick up automatically. So now I am getting to the audit of the 1920. If there are any queries, you can just ask now itself, because the question which I am expecting is why data should be two separate. Why data should be two separate years? Why not I have a continuous data? इसके लिए सिंपल एग्जांपल रहेगा कि मैं आपको एक किताब देता हूं और बोलता हूं कि इस किताब में पेज नंबर 1 से 20 तक की पढ़ना, 20 के बाद मत पढ़ना, 20 के बाद प्लीज डोंट रीड, ओनली अप टू पेज नंबर 20 यू शुड रीड, बियॉन्ड दैट यू शुड नॉट रीड. तो क्या होता है, अपनी एंजाइटी होती है कि 20 के बाद है क्या जो नहीं पढ़ना बोलते हैं, तो इमीडिएटली 20 के बाद ही देखेंगे. सिमिलरली when the department guy comes, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आता है तो वो पूछता है कि आपको सर्वे करने आया हूं. अगर सर्वे करने आया है तो एज पर द लॉ he can see only current year data, he can check cash, he can take inventory, and nothing else he can do. But what he will do, he will do something which is beyond to be done. If I have data continuously, he will see previous year data and try to find some error in that. So if I don't have the previous year data together itself, he cannot see that itself. That is one of the reason. Second reason is, अगर previous year data में कोई entry मार दी तो previous year data भी खराब हो गया और current year data भी खराब हो गया. तो every year you have separate data. So if I have separate data, what is the starting point for doing an audit? So when I do an audit, I can generate an Excel file which will become my working paper file. So according to me, the starting point is Alt G. यहाँ पे expand all levels करके आया है, and there is something called statistics. So there is a statistics. Various statistics are there. Current year data का statistics ये है कि कितने ledgers create किए हैं, कितने voucher types हैं, कितने voucher types को use किया गया है, कितने ledgers हैं, कितने groups हैं, कितने stock items हैं, categories हैं, so on so forth. So there is a multiple. आप पूछेंगे इसको क्यों देखना है? अगर ये देखूंगा तो ही मेरे को मालूम पड़ेगा कि टीम कितनी होनी है, कितने दिन में ये काम हो जाएगा, कैसे करना है. So what I will do is I'll compare this with last year. So I'll compare the statistics current year vis-a-vis last year. तो मैंने ऐसे ही इसको पूरा कंपेयर किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि टोटली इतने आइटम्स हैं. तो इतने आइटम्स हैं जो करंट ईयर लास्ट ईयर है. इसको ऐसे ही मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं. So I'll say current file. I can say this is exported to, and I can give the drive. So I can give a configure, show more, and I can give wherever I want. Say for example, इसको Tally Prime में रहने देता हूं और इसको बोलता हूं कि मैं इसकी फाइल का नाम, क्लाइंट का नाम, सपोज मैं बोलता हूं इसको, ये क्लाइंट का नाम है S0010 वर्किंग पेपर M21. So अगर मैं फाइलिंग का नाम भी बराबर दूंगा तो आई विल बी एबल टू नो व्हाट इज द document which is there. So if it is the statutory audit, I can say STR or SAR, statutory audit working paper, or TAR, tax audit working paper, and then I can say yes, and then ये पूछेगा कि इस शीट का नाम क्या है, statistics M21. तो मैं जैसे इसको एक्सपोर्ट करूंगा, ये एक्सपोर्ट होके एक्सेल फाइल बन जाएगी, and that Excel file I can always look at, and that becomes my starting point. Excel file में I can do an analysis. What is the movement which has happened? Current year का vouchers कितने हैं, last years के vouchers कितने हैं. You are able to see my Excel file which is getting open. I will not be able to show you all the files which are there. So a Excel file में I'll just give a comparison कि current year minus last year, how much is the movement.
एक क्लिक ऑफ अ बटन में मेरे को पूरा मिल गया कि कितना मूवमेंट हुआ है. देन आई कैन से दिस डिवाइडेड बाय दिस इज अ परसेंटेज. तो मैं अगर एक्सेल अच्छा यूज करना जानता हूं तो मैं फॉर्मूला दे दूंगा कि अगर 0 है तो 0 डाल दो, 0 नहीं है तो क्या डालना है. आई कैन जस्ट गिव अ फॉर्मूला एंड देन इट विल वर्क इट आउट. अगर यहाँ देखेंगे तो लास्ट ईयर 6, करंट ईयर में 6 कैंसिल हुए हैं वाउचर. व्हाई दे हैव बीन कैंसिल्ड, वी हैव टू लुक इनटू इट. सो दिस विल हेल्प मी इन डिजाइनिंग, सेइंग दैट कौन क्या एंट्री देखेगा, कैसे चेक करेगा. अगर यहाँ देखता हूं मैं तो यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 0 है. इसका मतलब देयर समथिंग डिफरेंट. If it is 0 0, the meaning is different. If it is 0 and blank, then there is a different meaning. What is the different meaning? अगर 0 है इसका मतलब है voucher type has been created but not used. Blank है इसका मतलब है voucher type itself has not been created. क्योंकि नॉर्मली रिसिप्ट ही होता है, रिसिप्ट नोट करके पीछे नाम दिया है, इट इज अ न्यू वाउचर टाइप क्रिएटेड, बट दिस इज नॉट क्रिएटेड इन दिस ईयर, but it was created in the earlier year. That is the issue. So मैं statistical कर सकता हूँ formula देके. I can just give a formula and copy paste that and say that मेरे का percentage wise एक report आ जाएगा. So I can now decide कि कौन सा area is sensitive, who has to see, who has to do the audit. For example, अगर stock journal बहुत सारे हैं तो ये senior member should look into it, because stock journal से there are many impact which will happen. So we have to find out why the stock journal was done, why it was done, who has done it, for what was the purpose. So that is the starting point of any audit which we start to do. This is the starting audit. Similarly, so go for display trial balance and go both ways, display और दोनों by this display trial balance. Normally when we start an audit, statistics हो गया, उसके बाद we will check the opening balance. So how do I check the opening balance of the data last year and the current year? So it is shift, all shift 1, and then I say expand all levels, detailed at all levels. पहले ये था expand at all levels, now it is detailed at all levels. Kindly note, for sundry creditors and sundry debtors, by default it will not expand. It will not expand because Tally ने इसको करके रखा है कि behave like a sub ledger. Behave like a sub ledger, it will not expand. Behave like a sub ledger means a group itself behaves like a ledger, और ट्रायल बैलेंस में लेजर बैलेंस देते हैं तो ग्रुप का बैलेंस दे देते हैं. तो ए एक्सपेंड कर दो, और इसमें अगर मैं 1/4/2021 का अकाउंटिंग में हूं एंड इफ आई चेंज द पीरियड टू April 19 March 20, that means there are no transaction previous year, only opening balances will be there. Now I can say Alt C, I'll go with 1920, and then for this I will give the reverse, क्योंकि इसमें अप्रैल के बाद कोई एंट्री नहीं है. So that is the reason I give totally different period for these 2 years, and then I will come to know the opening balance and the closing balance, though it is saying closing, but this is the new technique which I adopt to do opening balance verification. So अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है कि इस साल में लेजर का नेम रीचेंज हो गया है. लास्ट ईयर SFG HO करके था, इस बार SG HO करके है. If I want to rectify, I can just go straight away here and then say, अब देखेंगे तो ये दोनों एक हो गए. So that is one way of looking at things which normally we should not do, but इसको भी एक्सपोर्ट करके ऐसे एक्सेल में डालेंगे तो एक फॉर्मूला देंगे कि डिफरेंस किस किस में है, बता देगा. That's how we do the opening balance verification. Now let us get into, because I am not getting into the other techniques which are there relating to audit, I'll straight away go to audit and analysis, which is here called analysis and verification. Analysis and verification में सैम्पलिंग कैसा करना वो बताएंगे, एंड डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है. तो अगर सैम्पलिंग देखना है तो वाउचर वेरिफिकेशन में जाना है.
ये पहले ऑडिट एंड कंप्लायंस करके एक आइकॉन था, उसमें था, अब यहाँ पे लाके रखा है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन. सो डेटा एनालिसिस, आई कैन ऑलवेज नाउ इफ यू सी, दो डेटा बता रहा है, एनालिसिस विथ किससे किसका कर रहा है. सो आई हैव टू से कंपेयर डेटा एंड आई से कंपेयर डेटा विथ 1920 और मेरा पीरियड रहेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 20. दिस आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आई शुड सी कौन सा पीरियड का एनालिसिस कर रहा हूं और किससे कंपेयर कर रहा हूं. मैं कंपेयर कर रहा हूं प्रीवियस ईयर से और कंपेयर कर रहा हूं इस साल के ऑडिट के लिए. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स. और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेरे को बता रहे हैं कि इस साल में 33 लेजर नॉट अवेलेबल इन द करंट ईयर. अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 31 लेजर्स जो थे वो क्लोज हो गए हैं करंट ईयर में. नॉट अवेलेबल in the current year are these many ledgers not used, very risky area, not used, that is ledger created but not used. तो अगर ledger ही create किया गया है और use नहीं किया गया तो क्या कारण? Because this can be a fraud prone area. Not used in the current year, there are 23 ledgers, only balance last year and used in the current year, that is opening balance written off, again fraud prone area, only balances no transaction. इसमें normally आपके एडवांसेस, रेंटल एडवांस या असेट अकाउंट वही रहना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए. यूज्ड ओनली इन द करंट ईयर, देयर आर 32 लेजर्स व्हिच आर यूज्ड ओनली इन द करंट ईयर. सो दैट इज हाउ we can verify and create documents for the verification. Similarly, verification of stock of items, उसमें भी यही मेथड है. How many items which are there not available in current year, not used in the current year, it's not used at all, 740 items hai. Not used in the current year is 2299. Only balances no transaction 50 items. Only used only in the current year 1984 items. So ये मेरे को अगर analyze कर लेता हूँ तो I can ask them saying what is the nature of business. So it seems that you create new items and sell it off, or you are creating more and more items. Are you dealing in so many items? What is the reason that you do? So when you analyze, you will be able to find saying that yes, what is the nature of business? Is there any change in nature of business? Verification of balances. अगर ये red in color है, that means there is an error in this, and there is a error here. So what is the error and what I have to do? Can I say it is verified, or what is the verification note you want? You can note it down here itself. Analytical procedure. Group to group analysis. For example, last year के administrative expenses or other expenses or current year के other expenses. Comparative दे देगा. It is not picked up correctly because other expenses may not be there in the last year. That could be the reason. Other expenses could have got regrouped somewhere. So this will give you, for example, let us take sundry debtors or trade receivables. अब मेरे डेटा में आप ट्रेड रिसीवेबल देख रहे हो सकता है कि आपके अकाउंट में नहीं रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने सन्ड्री डेटास को रीनेम कर दिया है ट्रेड पेएबल्स. Then you have periodic payments and receipts, items which are periodically paid. So there could be salary, for example, periodic payment. क्या क्या आइटम पीरियडिक पेमेंट्स है? If I say it is periodic, then I have to say yes, update. Periodic ही है ये update हो गया. So it will now generate and give me periodic payments है क्या? Same way repeated transaction. Repeated transaction are transactions which are repeated in that particular ledger. For example, if I say conveyance, car petrol. कार पेट्रोल में रिपीटेड ये वैल्यू आ रहा है 3237 रुपीज 76 पैसा रिपीटेड ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट. फॉर एग्जांपल क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भाई आप एक्सपेंसेस सीक्वेंशियली डालना है, तो क्या करते हैं वो, इन सर्टेन प्लेसेस द एक्सपेंसेस आर बुक्ड इन सच ए वे विच आर पीरियोडिक. ऑल टू करके एक शॉर्टकट की है for duplicating a voucher, वो यूज करके कर देते हैं. तो we can find it out whether that has been used or not, that whether that is the method in which it has been done.
relative size factor. This is one of the powerful tool which is available. Relative size factor is the ratio between the highest valued voucher in a ledger followed by the second highest value in that particular ledger. Suppose I go into this ledger. So TDS, actually this is the interest which was loan paid. 90,000 is the highest and second highest is only 104. And that's the reason why the figure has come as 865. Normally, the thumb rule for expenditure is 2. जो मैं नॉर्मल खर्चा करता हूं उससे डबल खर्चा कर सकता हूं. अगर मैं पेट्रोल का खर्चा करता हूं, let me see whether petrol comes. Repairs and maintenance. Repairs and maintenance normally अगर पेट्रोल का खर्चा होता है तो मेरे सब वाउचर एक के पास दूसरे ही होते हैं. अगर 300 रुपीज मेरे टू व्हीलर है तो 300 ही डालूंगा, या कार है तो 2000 रुपीज का ही डालूंगा. So every voucher will be only 2000 rupees. Suddenly, if it is coming as 4000, then that means there is something wrong, which will the relative size factor will throw out. If it is more than 2, it has to be looked into. Interbank transaction, which is nothing but the contra vouchers. If I am using the contra vouchers, interbank transaction will be displayed here. Cash withdrawal and deposit into bank. That will be thrown open here and saying that ये cash में बता रहे हैं, बैंक के अंदर इसका तारीख ये है. यहाँ पे इसको 12 तारीख बता रहे हैं, परंतु ये 10 तारीख बता रहे हैं. 10 नवंबर को कैश डिपॉजिट करके बुक्स में बता रहे हैं, whereas बैंक में ये 12 तारीख को आया है. Straight away, I have to be skeptical and then ask the question why there is a delay. There could be genuine reason. Maybe 10th Saturday था, तब तक ये वाउचर बना दिए थे, बैंक गए, लेट हो गया, तो मंडे मॉर्निंग डिपॉजिट किया, हो सकता है. But then you have to ask reasons why there is a delay. All cash transaction 100% vouching should be done. Fixed asset analysis, क्या asset addition deletion हुआ है current year में, पूरा list दे देगा ये. And the entire list will be given. Why there is a deletion which is coming? It is only because of accumulated depreciation. Then there is no issue. Transaction on a holiday. Whether a transaction has been booked on a holiday can be seen through this particular icon, and I can configure and say मेरा weekly holiday Sunday नहीं है, Saturday है. I can just configure and they say 15th August 2000. 15th August is Independence Day. So I can just say, and this is a holiday for me. So it will capture and keep and then generate a report if there is any work or any done on a Sunday. So Sunday पे क्या काम हुआ है ये बता रहा है कि Sunday पे भी entry हुई है. So if I am saying weekly off नहीं है तो weekly off नहीं है करके डाल सकते हैं. And it can, if I want, I can use this as a save view also. We'll see save view separately. Highest and lowest value vouchers, and this along with relative size factor has to be seen together. Highest value and lowest value ये बताएगा कि एक ट्रांजैक्शन एक लेजर के अंदर कार पेट्रोल अगर देखता हूं तो हाईएस्ट वैल्यू क्या था और लोएस्ट वैल्यू क्या था. लोएस्ट वैल्यू क्या था और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाउचर्स इन दैट पर्टिकुलर लेजर क्या था. बिकॉज क्या होता है कि अगर मेरे को मालूम पड़ता है कि आप आके रिलेटिव साइज फैक्टर देखोगे तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सपेंडिचर डालूंगा 1000 रुपीज का और उसी का रिवर्स एंट्री कर दूंगा 1000 रुपीज का. तो अब उस लेजर में हाईएस्ट वैल्यू 1000 है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू इज आल्सो 1000. तो दोनों का 1000 होने के कारण वो वैल्यू विल कम एज 1 एंड इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड. सो आई कैन अवॉइड गेटिंग एक्सपोज्ड. तो उसके लिए ही you have to see the highest value and the lowest value, and it will throw open the ledgers which is there. Pending advances, these are deposits which are advances which are pending. Stale checks are checks which are more than 3 months old, and I can do the configuration here also. अभी validity 3 months है तो इसको 3 months लेके if there are any stale checks it will be shown. If there are stale checks, the requirement as per the audit is to be reversing the entry, and because otherwise क्या होता है कि मेरा क्रेडिटर कम हो जाता है और बैंक का आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो जाता है, which is not the actual fact. क्रेडिटर पे नहीं किया गया है तो क्रेडिटर ही खड़ा रहना चाहिए
So my current ratio and all the ratios will get affected. And that's the reason why at the year end, if there are stale checks, then it should be reversed. We are going to the sampling. Sampling में, so I can get into the vouchers. I'll just go one or two because we are running out of time now, because we have other things to also see, otherwise we'll miss out. Say for example, अगर मेरे को सेल्स देखना है, सेल्स का सैम्पलिंग करना है, तो मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को सैम्पलिंग बताओ. सॉरी, so I have to configure sampling, sample configuration. तो मेरे को क्या अभी 27 वाउचर ही है तो 100% करना है, या मेरे को अमाउंट रेंज में करना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक के इनवॉइस लेके देखना है, और बेनफोर्ड एनालिसिस करना है. बेनफोर्ड इज अ थियरम वेयर द नंबर 1 to 9 as reflected as the first number in a bundle of vouchers or in the population, there is a formula. For example, 133 times आता करके बोलते हैं. If I start writing some numbers randomly, I will use more one without getting influence. If I am going to write, then one will be repeated 33 times. That is what the theorem says. And then I can say, okay, I am agreeing with that, positive or negative, और मेरे को सैम्पलिंग करके दे. इसने सैंपल निकाल दिया. ने क्लिक ऑफ अ बटन, सैम्पलिंग हो गया. 4 वाउचर है, 4 वाउचर देखना है. मैंने ऑल्ट एंटर मारा तो वाउचर खुल जाएगा. वाउचर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. अगर मेरे को पूरा ही देखना है, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर मारूंगा तो वाउचर ही खुल के पूरा बता देगा कि मेरे को वाउचर क्या है. क्या होता है कि नॉर्मली व्हेन वी डू एन ऑडिट, we tell them that audit करते समय you should not go into the voucher, because if you go into the voucher you have a chance of making an error. यहाँ पे जाओगे तो आप चेंज कुछ नहीं कर पाओगे. You can just see. If you see I am not able to move anything, I am not able to do anything else than only moving up down. I am not able to do anything else. कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई एडिट कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. So that is the advantage of that. The shortcut key is Alt Enter. Alt Enter voucher open करके बता देगा. So this is about sampling. और ये बताएगा कि सैम्पलिंग आपने कैसे किया. Again I'll show the other sampling which are there. Benford method हो गया. Even number, that means 50% करूंगा मैं. Odd number again 50%. Odd number of voucher, even number of voucher. Specific period. मेरे को 2 महीना करना है, 3 महीना करना है, तो that is specific voucher. And specific vouchers and specific period. Specific voucher तो मैं select करूंगा manually कि कौन सा voucher I will verify. So this is all about sampling technique, and this is all about audit and analysis in Tally. Before we venture into other areas, if there are any doubts, we can clear that before we can proceed into other areas. So if there is anything, put it in the chat box. We will try to answer that. No doubts? So let's get into the Alt G. For example, अगर समझ लो कि मेरे को भी I want to see the we will just now to see how we can use the save view. Suppose मेरे को एक particular person wants to see the for example, if I want to see Alt G, ledgers or sundry debtors,
group summary, trade receivables. ग्रुप वाइज बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया. अब क्या होता है कि सेम पार्टी कैन बी ऑल्सो इन क्रेडिटर्स. पॉसिबल है, आई बाई, आई सेल, आई क्रिएट एंड मेंटेन सेपरेट लेजर्स. तो मेरे को अभी उसका ग्रुप चाहिए. ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल्सो आई वांट टू सी. ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आई वांट टू सी टुगेदर. एंड देन I go for auto column and then I say yearly and I want total. अब देख पा रहे हैं? Please respond whether you are able to see my screen. Yes. Yeah. So now if you see the trade payables जो था और trade receivables, suppose the parties are same, then these parties will get reflected here also. So the party's name also will be reflected here. The party name also will be reflected under datas, under creditors, and the total will come here automatically, group total. Because the trade payables में भी ये नाम था, ट्रेड रिसीवेबल में भी ये नाम है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग उसका कितना है करके बता देगा. So that is the advantage which you have when you are going to create. And I can save this as my view. So group summary, whatever name I want to give, I can give. So I can give something different, possible. Group outstanding. मैं सेव करके आ जाता हूं. So now when I go for Alt G, ये मेरा यहाँ पे लिस्ट बता देता है कि आपका ये व्यू अवेलेबल है. So जैसे इसमें जाऊंगा स्ट्रेट अवे ये रिपोर्ट बता देगा. तो मेरे को अभी किसी को भी बताना है कि I want anyone to be taught how this report has to be viewed. For example, a company के managing director he doesn't have time and he says I want to see myself. I don't want my even secretary to show me. So I can just say open tally. आपका open tally के अंदर user ID, password, credentials दे दो and then go to, and this will be shown there and you see, it will immediately show you on the screen. And if you want to take a print, उसका print लेने का भी option बता देंगे, सिखा देंगे कैसे करना है. Alt P current and it gets printed. So this is the advantage of saved view. I can have as many views as I want. For example, if I go for cash and I want all payments, I can say Alt F12, voucher, ledger value, ledger amount greater than say 500. So all ledgers with value of more than 500 will come out. Or I can say Alt F12, I want ledger name containing or group name containing group name parent group as expenditure. Alt F12, ledger name containing expenses. So cash के अंदर whatever is the expense paid in cash over rupees 500, I have filtered out. So for an audit purpose, this I can always save as a view saying that this is my cash payment above 500. That's all. So whenever I have come to the main screen. So when I am going to do an audit, Alt G, cash above 500. Immediately निकाल के दे देगा. If I want to period change the period. So it will automatically throw open all payment above 500 automatically in this screen. So this is what is my saved screen. So when I save view, it will ask me whether it is to be saved as default view for the report
I have to say yes. And additional configuration also it is asking me, is it for all companies or for this company? So if I say for all companies, that means any company I open, this command will be open and I can generate a report and see. And I can also say whether it is for a selected period, or if it is selected period, then what will happen is for the subsequent company also, the same period it will get open. So when I come out now, Alt G, cash payment, I say petty cash, it will throw open the entire data. This is about saved view. So suppose you have done a saved view and you want to remove all the saved view, then F11, troubleshooting, delete all saved views. So it can get deleted automatically. All the saved view will get deleted automatically. So any doubt? This is about saved view. You can have umpty number of reviews, whichever we can do. There is umpty number of views we can have. There is nothing which can stop you. Saying that you can have only 10 saved view or 20 saved view, nothing. You can have as many as. So, but you have to be very careful in creating these saved views, because more saved views you create, other things will go down. This will be on the top, and unnecessarily it will be blocking your other visibility which is there. And it should be sparingly used because it is a special technique to be done. So this is about saved view. Ankit sir, you are taking over for e-way bill. Darshan ji, are you there? Hello. Yeah, I'm there. Yeah, please. Yeah. Good afternoon, all. I'll share my screen. Our next topic is e-way bill. Now, what exactly things have started in Tally is we are now with the Tally Prime platform, we are able to connect our Tally with department's portal. And how exactly we can interact with them, we have seen this in our past release 1.x, where e-invoicing we had started. But now we are starting with the e-way bill also, which is very much needed for any dealer who is trading or billing any transaction above 50,000. Now, for the compliance sake, if we say that there are a lot of things like we need to check whether the bills which are applicable for e-way bill, whether a e-way bill has been generated for that, and whether e-way bill, okay, how the clients are making. So if they are making it means they are passing a transaction in Tally, and then they are manually doing it on the portal, then there could be chances of the mismatches. So to reduce all that thing, we introduced e-way bill directly from Tally, and we'll show you how exactly it works out. I'll share my screen. Just confirm me whether my screen is visible or not. Can somebody confirm whether my screen is? Yes. So now this is Tally screen. Okay, no major configurations required as your normal sales invoice anybody was making. The same way we have to make. Only the thing is that few information needed by e-way bill system that we need to provide. So from the gateway of Tally, here I go into vouchers. Here I select the party, sales. I pick up a product, and this product is above 50,000. The invoice is above 50,000, so it is asking me for e-way bill details at the bottom. So when I say yes for the details, all the information majorly gets captured over here from the masters. Few things like the distance. Now, first time the distance would not be appearing. First time we need to check the pin-to-pin distance from the portal, and there we write the distance. Next transaction with this party. Okay, it will automatically give me the distance.
And that's why this remembrance of this distance is not needed much. Now here I select a transporter. Once I select the transporter, transporter ID also pops up together. Tally has the flexibility. If you want to keep the transaction part B empty and leave it for the transporter to fill in the part B details, then one transporter can do that. So here I'm just leaving the part B information because I really don't know the vehicle number which my transporter would be using to transfer my goods from one place to another. Now, after doing this, I'm just saving the transaction. Now, when I'm saving this transaction, okay, here it will ask me for username and password. Now, this username and password is it is generated on the NIC portal, e-waybill portal. So normal login to the portal, that username and password we need not use it. After logging in, there is a API user which we need to create, and that username and password we need to feed in over here. Now, once I've fed that, okay, it is giving me the message e-waybill generated successfully. Okay, the details are uploaded in the transaction. So now I just need to click over here and take the printout. So here when I'm taking the printout, this is the invoice with the e-waybill number. So basically what has happened, Tally has interacted with NIC portal. Now it's not that any software can interact with the NIC portal. It needs to come through a via media, and via media for this situation, the department has appointed few GSPs. Okay, there are GSPs like GST Suvidha provider. Okay, there are companies which provide these services. Just like in our banking transaction, we have Visa, we have MasterCard, RuPay. So even for this integration, okay, GSP is needed, and GSP for the good part of Tally user is that the Tally company is also a GSP. So you need not go out from Tally software. Okay, from Tally itself, you can generate your e-waybill. Okay, so that was the invoice, and even the e-waybill print, you can take it from here. Now, this is the QR code which got generated. You can scan this and you will be able to see that this will give me the information relating to the transfer which I'm doing. Now, this is one operation. There are many other operations also which can be done from Tally itself. So I'll show you one report in Tally for e-waybill. So this is a summarized report of e-waybill. Auditors can see this and really identify that key visual invoices the bill and or information is missing. So that all things can be captured into this summary report. So uncertain transaction. So if any information is missing out, or if there is any mismatches into the tax amount or ledger selection, so this can be pointed out very clearly over here. And after that only the data can be uploaded to the portal. Now, even if portal rejects your invoices, okay, because of some or the other reason, then that rejection errors, okay, that would be seen on your Tally in blue color. So this information has come from the NIC portal, and you will be able to see various reasons for different activities. For example, here I had tried to go for a cancellation of the e-waybill. So it said that the validity period had lapsed, so you cannot cancel this e-waybill. So, and if there is any wrong state code, or there is any wrong HSN code, so it will pinpoint over here and we need to correct accordingly. So these are some of the areas when Tally will be assisting us for getting the errors in our one screen itself rather than shifting onto different screens. And moreover, what happens is that this is all beneficial because of the GSP in playing a role at the backend, and it is invisible for you. So any user of this subject can be able to generate without any flaw. Now, with this capability, like we can do multiple things. We can cancel the e-waybill. We can extend the e-waybill. So all those functionalities are available in Tally.
So if I see the report, so here if I'm seeing the report, this is with part B, without part B. So on the right hand side, you will be able to see extend e-way bill, cancel e-way bill, update transporter ID, update part B information, and get e-way bill. So all these flexibilities, all these functionalities has been provided in Tally. So a person need not go outside the Tally, do some different activity. This will benefit in two things. One is duplication of work can be reduced to a greater extent. And second thing, accuracy can be maintained to a higher level. So this can be adopted to a greater extent. Many people have started using it. Okay, for any assistance for this, our channel partners are always available, and even our toll-free number is always available for your clients. Now, with this connectivity with the NIC portal, Tally is now able to validate their GSTINs and HSNs with the NIC portal. So let me take you one example. If I'm making a new sundry creditor, okay, and then I want to check whether his GST number is correct or not, address details I have written properly or not, and whether I need to do trade with him or not. So here, like such questions do come across. So his CRISIL rating, or if I say the portal rating, what we can say, can be seen it over here. Like for example, when I click, there is a button on the right hand side, get GSTIN UIN info. When I click this, it will give me an information that the party details. This is just a dummy data, so that's why the names are differing. So portal will give everything in blue. Tally will show you in blue. Trade name, legal name, address, registration type, and whether it is regular or a composite dealer, that we can see. Status active, and e-way bill blocked or not. This is a very important area. E-way bill blocked or not. So if it is blocked, so you understand that this person is not filing his return, and because of his e-way bill is blocked, and even he will not be able to ship the details to us, our goods to us. So you can take up a decision. And this is not only to one customer. It means at a regular intervals, if you want to see all the parties with the GSTIN validation. So there's a report in Tally called Alt G for, and you can say update party GSTIN. So here I can say I want to see all the ledgers, and here I can click on this button called as get, and here I click all GSTINs. Yeah. So here it is showing me all the details. Okay, whether it is validated or not. Now, I can see all at one go also, and I can see one individuals. Now, secondly, we have started with the HSN validation. Even this is also very much needed. There are sometimes changes into the HSN also, and interpretation also. So for that, we need to check this. And for that, there is a place called as one place where you get all the items with HSNs. So I press Alt G, and there is a report called as GST rate setup. So here you get all the products along with the HSN and their rates. So you can select them, and you can select all also. You can select them, and you can click over here and check the validation. So it is giving me the information that whether you are able to validate, means, and if there is any incorrect information, then it will tell me to correct it, invalid HSN code. So this is the way how exactly we can start off with the validation part of it. Okay, and connected world. This we are calling it as a connected services, and for this TSS is needed. So if you are having TSS, you can definitely exchange the information with any portal. So that's it from my side for this. If there are any queries, please let me know in the chat so that I can try to reply. And if you have liked this, I would like to just check whether it is important for you or not. In the chat option, you can just let me know yes or no. And if any queries, please let me know. You can unmute and even ask me the questions. Darshanji, can you just take up the connected services if the brief report, if possible? Sorry, can you be louder? I'm not able to get you. Darshanji, I said, can you just take up the mobile report on browser topic? Okay. How we can take Okay. Okay, Uttam ji, आप ले रहे हैं? I'll take. No, you take it.
Okay, okay. Okay. So, friends, this is one more interesting thing which I would like to share, and this is like in various forums, people have asked that how exactly we can share our data and keep it visible whenever it is needed, and especially onto a device which is there with me. There is one possibility that I may not be carrying my laptop all the way, all the time, and I'm at least to be carrying at least a mobile with me to all the places. So if I want to view any data on mobile, then how can I see that? So friends, you can see the same thing with me right now itself. So here I'm connecting one company. There's a company called as ABC Enterprise. Okay, and with this ABC Enterprise, I have done some configuration. I have written some email address into it, and with that email address, you will be able to see this company's data on your mobile. So for that, I'll just show you. I'll just write it for you in the chat option for everybody. It is, you can do it along with us. Okay, and please give us a feedback whether you are experiencing that same thing or not. So here I'm writing. You need to go through the please you can pick up your mobile. On your mobile you can open any browser could be Chrome, Safari, or you can even Mozilla, anything you can open, and go to Tally website and login page. Okay, so pick up your mobile. Okay, and I'll do with you. So I'm connecting my mobile on the screen, so we can do all together. So this is my mobile. So tallysolutions.com, and here on the right hand side you will be finding a login option. If I log out from here, I'm just logging out from here. So on the right hand side you get the option for logging in. So when you're logging in over here, so you need to write over here a username called as demotallyuser@gmail.com. demotallyuser@gmail.com, and the password would be 12345. Friends, I hope some people are doing with me. So you need to go to Tally website, log in with this credential, demotallyuser@gmail.com, and the password is 12345, all numeric, 12345. Okay, so then you just click on login. So here you will be able to see two companies, ABC, Darshan. So you can pick up Darshan, the company. And now you will be able to see any report which you would like to see. So here, if I want to see, these are financial reports, ledger reports, registers, forex reports. So all these reports are available. And from here, I can go to common reports. Let's say I'm going into balance sheet. This is the balance sheet which I'm able to see. These are the options available, what I can do with the balance sheet. For example, if I want to see everything in crores or lakhs, so I can select that. Let's say I select lakhs, apply. If I want to download this, I can download this in PDF and Excel format. One of the classic thing which I have seen over here is this is showing me in vertical format. If I tilt my phone, so it turns into a horizontal format, and now I can view in T format.
Now, these are some things, experiences which you can enjoy on mobile. Now, along with this, let's say I want to see profit and loss account, or I want to see daybook. So I can go into daybook, and there are few buttons over here which I can toggle. So on the, you can see over here arrow keys which can take you previous day, next day, previous day, next day. And if you want to specify period also, so here you can specify period also. So let's say from 1st of October till 1st of November, I want to see. So I will be getting all the data from this. Okay, and if I go inside it, let's say if I'm looking out for any sales transaction, so I can go into any sales transaction and download this. I can download in PDF format, and after downloading, I can send it across to the party to whom I want to send. And for if I talk about chartered accountants, okay, if I talk about chartered accountants, they can really consult their. There are many people who would like to they would like to show their data, the chartered accountants clients data, clients on the field. Then they can just add their email address and show. They can see their outstanding, download the things. You can even plan out the advance tax when they are in a quick zip and they want to say that, yeah, what advance tax I need to pay. So we can just go into the profit and loss account and just see that what things can be done for it. If you ask what provision I need to make next month for the GST payments or TDS payments, so that also you can easily configure over here. So these are few things which can be really worked upon on a mobile. Friends, if somebody would have experience, can you please share in chat whether you experience this on your mobile? Are the audience there? Sorry, my voice is audible? Yeah, it's audible. So can I get some reactions either in chat or they can unmute and then also they said they can say. Friends, I would even like to learn from you that this is not a useful thing for us, or it's not a way of making any sense for us. Dasan bhai, there's one reaction saying no vertical. Sorry? So Sanjay Datta करके है, उन्होंने बोला है no vertical. I think he is not able to see on the horizontal view. उनको सिर्फ मोबाइल टिल्ट करना है. मोबाइल टिल्ट करोगे तो it will show it in horizontal. Yeah, means वो अगर आपका ये मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए. मेरे मोबाइल में ये इस तरह से दिख रहा है आपको. ओके, तो यहाँ पे अगर वो टर्न होना पॉसिबल, ऑटो रोटेट ऑन रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा. ऑटो रोटेट, यस, थैंक्स. And on laptop it is he's saying on laptop it is showing only vertical. There also to change view. One sec. उनका क्वेश्चन लैपटॉप में है कि on laptop it is showing me only vertical. तो टैली डेटा ओपन कीजिए ना. नहीं, इसमें नहीं देखना उनको टैली के अंदर ही देखना है. टैली के अंदर ही दिखा दीजिए दर्शक जी, जो अपना चेंज भी करना ना. करके बताना. बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है, आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, उनको बाय डिफॉल्ट वर्टिकल दिख रहा है. चेंज व्यू में जाके करना. One question is there any Tally app for mobile view?
ऐप की जरूरत ही नहीं है. You can see it using the browser itself. No need to go for any app as of now. उसके लिए आपको टैली डेटा के अंदर you have to create a user ID, and that user ID has to be with an email address, and which has to come under your configuration, and you can see it. Yes, just adding one more point here कि जो राइट्स आप जिस भी यूजर को आप अलाउ करेंगे वही रिपोर्ट जो है वो सिक्योर्ड लेयर के थ्रू वो एक्सेस कर पाएंगे. लेट से आपने अगर बैलेंस शीट का परमिशन नहीं दिया ब्राउजर रिपोर्ट पे अलाउ नहीं किया हुआ तो बैलेंस शीट ऐसे करके जो भी रिपोर्ट आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो रिपोर्ट नहीं दिखेगा. करेक्ट. यस. तो एक क्वेश्चन, ये सिक्योरिटी कंट्रोल जो है, सिक्योरिटी कंट्रोल सबके साथ मिक्स करेंगे तो और भी पावरफुल हो जाएगा. एक क्वेश्चन है वेयर वी गेट ईवीबिल फीचर इन आवर टैली. कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. आपको F11 में जाके ईवीबिल फीचर को एनेबल करना होगा. तो आप एक वन टाइम प्रोसेस है, आपने एक बार एनेबल कर दिया तो ईवीबिल फीचर जो है वो यस हो जाएगा और ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा. ओनली थिंग इज ईवे बिल जब आप जनरेट करोगे तो ये यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा ईवे बिल वेबसाइट का. वो 6 घंटे के लिए कैप्चर रहेगा. उसके बाद अगेन इट यू हैव टू वैलिडिटी 6 घंटे का है, 6 आवर्स. 6 घंटे तक आपको वापस मांगेगा नहीं. उसके बाद वापस मांगेगा यूजर आईडी पासवर्ड जब आप ईवे बिल जनरेट करोगे तब. So this is the place where you see the e-way bill and you can just configure the things. इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी तरह से करना. एक और क्वेश्चन है दर्शन जी, उत्तम जी, GSTR 1 की डॉक्यूमेंट समरी रॉन्ग शो होता है तो वो क्यों शो हो रहा है? रॉन्ग इन द सेंस, वैसे डॉक्यूमेंट समरी अगर आप GSTR 1 ये डॉक्यूमेंट समरी आपका गलत हो सकता है क्योंकि आपने आप कहां से मैप कर रहे हो, उसको कहां से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो. अगर आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो थ्रू सेल्स रजिस्टर और सेल्स लेजर तो कोई भी कैंसल्ड वाउचर वहां नहीं दिखेगा आपको, ओपन भी यहाँ पे दिखेगा टोटल में. और वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनीवेयर वेयर दिस समरी वाज रॉन्ग. मे बी वो बग था तो टैली प्राइम 2 में करके देखो, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आना चाहिए. And also the HSN summary has got updated now. The HSN summary as required in GSTR 1, that is percentage wise summary, total summary अब जनरेट हो जाता है. तो अगर आपका सिक्योरिटी लेवल बराबर है, सिक्योरिटी डेटा सिक्योर्ड होता है तो आपको टैली से ही JSON फाइल जनरेट करके फाइल करना है. तो your data duplication will not have at all. तो आप टैली के अंदर पूरा कर दिया है, टैली से JSON जनरेट करो और अपलोड कर दो, हो गया काम. GSTR 1 फाइलिंग विल बिकम पक्का. एंड देन इफ यू आर मोर सिक्योर्ड देन आप लॉग भी कर सकते हो कि कोई भी डेटा प्रीवियस मंथ एंड के पहले चेंज नहीं कर सकते. थैंक यू. एक क्वेश्चन आया है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर आर नॉट शोन ऑन इनवॉइस. Sorry, unregistered customer are not show on invoice. वो इनवॉइस पर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है नहीं बता रहा करके बता रहे हैं. Yes. When you raise a sales invoice, you raise a sales invoice for a party, and when you create the party, you say is the customer. तो GSTN जो नंबर रहता है वो ब्लैंक रहेगा, वो अनरजिस्टर्ड आता है क्या? आप एक इनवॉइस देखिए. I could not get the question. Like, should I show something over here? Uttam sir. You raise the invoice for a unregistered dealer. Let's say unregistered party. Okay, and here I say that he is a consumer or unregistered, anything one. Unregistered. Okay, so here I make a transaction and sales invoice. Yes.
If you have seen the screen correctly, उन्होंने GST वैल्यू टाइप ही नहीं किया था. Just showing ये आ रहा है उसका पार्टी का नाम तो आ रहा है. पार्टी का नाम आ रहा है. The GST नंबर की जगह पे अनरजिस्टर्ड आना चाहिए करके बोल रहे हैं. पार्टी का नाम आ रहा है, बट पार्टी अनरजिस्टर्ड करके जैसे नॉर्मली GST नंबर रहता है, GST नंबर नीचे आ जाता है, पार्टी के नाम के नीचे GST नंबर आ जाता है. ये अनरजिस्टर्ड है करके नहीं आ रहा है, या कंज्यूमर है करके नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं. Okay, but is it needed? Like by law, it is saying that the invoice should contain that thing. Not required. Not required. Not only required. only in case they are registered, the GST number should be reflected. In any ways, like in an extended address of that party, we can write is an unregistered dealer. जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं है. वैसे अगर चाहिए तो आप एड्रेस में ही लिख दो कि अनरजिस्टर्ड है. क्योंकि एज पर द GST लॉ इनपुट के लिए यू शुड हैव ए इनवॉइस, और इस इनवॉइस में आपका नाम रहना चाहिए और आपका GST नंबर रहना चाहिए, और GST चार्ज कितना किया गया है वो लिखा हुआ रहना चाहिए. Correct. There is one question, I think, in relation to reconciliation or something like that. Yeah, it is relating to the 2A and 2B. 2A का reconciliation, whether we can pull inside 2A and do a reconciliation. Earlier it was there. I think they are working on it. Yeah. So the earlier in the release, means in from Tally ERP9 2 reconciliation, monthly reconciliation is there still continuing. However, since now we are doing this connected services and we are on this new platform of Tally Prime, in our next release, we can expect this release 3.0, that the reconciliation and the return uploads, everything would be able, we might expect in the release 3.0. Correct. तो उसका भी एक कारण है, डिले होने का कारण है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी अभी पक्का नहीं है कि कब तक वो अपडेट करते हैं, कहाँ अपडेट होता है और कितने दिन में अपडेट करते हैं करके वो कंफर्म करेंगे तो ये आप कर पाओगे. अदरवाइज वी विल आल्सो नॉट बी एबल टू डू, बिकॉज द स्टेबिलिटी हैज टू कम एंड दैट देयर एंड. वंस द स्टेबिलिटी वी विल बी एबल टू डू इट. Exactly, because of the inconsistency of the data and data flow. Okay, the means the testing is going on anyways. Like it is like a co-working is going on. So we are giving feedbacks to the department. Even they are also checking out with the softwares, and they are looking out at how best we can provide the solution for any user. Sir, of F11 में again show them the e-web bill feature. Okay, so over here, one second. F11? F11 में e-web bill. Yeah. See the. See the most part over here I would like to share is that the login credentials. So you have to create a login credentials. A API user you have to create on the NIC portal, that is the e-web portal. And when you are creating that, you need to select a GSP, Tally India Private Limited. So once you have done that, so that API user and credentials, when you are using it for sending the GST invalidation or HS invalidation or e-web bill you are sending, so that time that credentials will work out and it would be a smooth flow. Yeah. Any further questions? You can raise your hand and ask for unmuting yourself. And last few, I think few minutes are left. There is an error in GSTR 1 for state Dadar Nagar Haveli State Code 26. Sir, which release we are using, sir? Because this was the problem in ERP, and we later on changed it with the in ERP only we made some changes. And it is coming perfectly into it. But if still some problem, just let us know, we will correct it. Because I don't think so this is a problem. It could be some data specific issue. So let us know offline, we will correct this. वो बोल रहे हैं कि it is in generate in Excel. Status में Excel में generate कर रहे हैं. तो we need to check, sir. तो normally कोई Excel में generate नहीं करता है, वो सीधा JSON फाइल करते हैं और JSON फाइल
वहाँ पुल कर लेते हैं और वहाँ पे फिर वापस देख लेते हैं कि क्या करेक्ट आया नहीं आया. But anyway, sir, means sir is having concern in the Excel. We need to correct that also, because since we are giving the export in Excel, so it should be also in a correct manner, even though if JSON is correct. Pankaj ji, definitely, please do share your email address and your contact details. We'll definitely get back to you on this. Or you can also, Pankaj ji, you can reach out to our partner. So through them also you can highlight your issue. We can Exactly. Yes. Any other question? Yes, I would request if you have any further question, please put it over chat so that we can try to address it here. जैसे अपना Otherwise, फोन कितना पावरफुल है उतना ही टैली भी पावरफुल है. अपने को स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है अपने को ही नहीं पता. वेरी सिमिलरली टैली के अंदर इतने फीचर्स हैं कि आपको पता ही नहीं कि ये फीचर अवेलेबल है. जैसे जैसे बिगिन करते हैं तो मालूम पड़ता है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ई पेमेंट कुछ बैंक के लिए टैली के अंदर आ गया है. अब ई पेमेंट टैली को रख के ही कर सकते हैं. तो आपको ऑटोमेटिकली टैली का रिकंसिलिएशन भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा और डेटा भी अपडेट हो जाएगा. पर उसके लिए प्रोसीजर है, जस्ट बी फॉलो. बट दिस आर अवेलेबल व्हिच वी डोंट नो दैट दिस इज अवेलेबल. ई पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम टैली. yes. So we don't have any further questions. So thank you, Uttam ji and Darshan ji, for your detailed presentation. And I would request everyone, आप टैली प्राइम रिलीज में माइग्रेट कीजिए. माइग्रेट करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. अगर आपका लाइसेंस एक्टिव है, सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. जस्ट आपको वेबसाइट में जाना है और लेटेस्ट 2.0 रिलीज है उसको डाउनलोड करना है और आपको माइग्रेट करना है. और आप मतलब बहुत ही इजीली जो है सेल्फ जो है आप खुद ही माइग्रेट कर सकते हैं. अगर आप माइग्रेशन में कोई भी सपोर्ट चाहिए, देन हमारे पार्टनर है, देन टैली सॉल्यूशंस है. वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प. तो आप माइग्रेट कीजिए. अगर आपका लाइसेंस जो है सब्सक्रिप्शन वैलिड नहीं है तो लाइसेंस को खाली आपको माइग्रेट करना होगा. एंड माइग्रेट करने के बाद आप ए रिलीज को अपग्रेड कर सकते हैं. एंड ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है. आप जैसे देख रहे हैं कि अभी जो रिक्वायरमेंट है HSN परसेंटेज वाइज GST फाइल करने के लिए, देन में हम HSN सर्विसेज आप इससे पहले कनेक्टेड सर्विसेज में आ चुका था टैली प्राइम के अंदर. ERP में हम कोई भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो रहा. जब भी जो भी अपग्रेड होगा अभी टैली प्राइम के अंदर होगा. सो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इमीडिएटली जो है माइग्रेट करें और स्टार्ट करें टैली प्राइम को यूज करना. यस उत्तम जी. एक और पॉइंट था कि आपको ये डाउट हो सकता है कि मैं अगर अपग्रेड कर दूं तो क्लाइंट का डेटा ओल्ड टैली में और वो अपग्रेड नहीं हुए हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज पैरेलली बोथ. पुराना और नया दोनों यूज कर सकते हो पैरेलली. यस. अगर यस आपको अगर दोनों चीजें चलाना है, ERP और टैली प्राइम, वो भी फंक्शनलिटी आपको मिलेगा. को एग्जिस्टिंग में दोनों एप्लीकेशन रन कर सकते हैं. सो कुछ दिनों के लिए अगर आप कहते हैं कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, प्राइम का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और उस समय तक मैं ERP 9 भी यूज करूंगा, तो वो भी आपको वो ऑप्शन मिल रहा है. और उसके लिए कुछ आपको अगर थोड़ा सा भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, देन हमारे पार्टनर है, देन वी आल्सो देयर फॉर यू. और इस माइग्रेशन प्रोसेस में जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी तो उसको सबको हैंडल करने के लिए we would be helping you throughout this migration transition. So आप इस कॉन्फिडेंस के तहत आप माइग्रेट कीजिए, यूज कीजिए और अपने क्लाइंट को भी एनकरेज कीजिए टैली प्राइम के अंदर आए और ये सारे जो लेटेस्ट फीचर है
और यूज करें। जैसे सेव रिपोर्ट जो है वो एज ए प्रोफेशनल आपको बहुत मदद करने वाला है, बहुत टाइम सेव करने वाला है। सो आप इस प्लीज जाके एक्सपीरियंस कीजिए। एंड एज ए प्रोफेशनल जैसे आप हमें सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और ये प्रोडक्ट आज बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में, इसी वजह से कि आप लोग जो है आपकी सजेशन और फीडबैक के थ्रू हम डेवलपमेंट करके ला रहे हैं ये प्रोडक्ट। सो विद दिस आई वुड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने टाइम निकाल के ज्वाइन किया सेशन को और अटेंड किए, तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। और हम ऐसे सेमिनार जो है और कमिंग मंथ्स और कमिंग टाइम के लिए भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।